Good evening, sir. Good evening, ma'am. I hope you can share the screen. Try once. Yes. Shall I check it once? Yes, please. Is it okay, visible? Yes, yes, it's allowed. Okay. Just tell me when to start, huh? Just 2 minutes we wait. Sure, sure. Okay, sir.
May we start, sir? Yes, please. Let's start now. Hold on. So, good afternoon, good evening, all the participants. Welcome you all. On behalf of Aryavata Sahodaya School Complex, I welcome you all. I, along with our Deputy Training Coordinator, Simple Ma'am, I welcome our resource person, Mitali Ma'am, and we request, because the participants are continued to be joining, so I think we should start, Mitali Ma'am. Yes, sir. So I request Mitali Ma'am to start. Please start, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, Aryavat Sahodaya, for giving me a chance to conduct this session. And I think this is my last session with Aryavat Sahodaya for this academic session. The last part was the most important. For this academic session, this is my officially the last, in-house training session. So I'm super excited that I'm closing this for this session, and the new session is awaiting us. And I hope we do a lot more new things and new topics and new sessions in the next year, because there's so much happening in the education industry that at least, it fascinates me a lot. I don't know how you are feeling about it, but yes, at times we do get boggled up with so many changes. But at the same time, when changes happen, we feel excited. We feel that we have to do something new, and change is inevitable part of our life. So I'm looking forward to this change and hope you are also. So today we are going to discuss a very interesting topic, that is developing a learning culture. Like, for example, teachers, what I want to tell you is every time you cannot spoon feed any person. For example, you have a maid in your home. If somebody is helping you at home, suppose, for you, that person so be is maybe very, very unimportant. क्या है, she's just doing my, or he's just doing my household work. लेकिन आप ये सोचो that if you spend some time and if you train the person as to what are your expectations from that person. You don't train that person कि भाई भिंडी की सब्जी ऐसे बनती है और पोछा ऐसे लगता है, ये नहीं. आप अगर उसको ये ट्रेन कर सको कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे क्या है और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने का एक रास्ता उसे बता सको, तब आप देखोगे जब आप स्कूल से घर वापस जाएंगे, you will find that everything is prim and proper. You don't have to struggle. You don't have to shout. You don't have to bog your head against the wall कि why the work is not being done properly. कुछ ऐसा ही हमारे स्कूल में भी होता है. You are a teacher. I'm a principal. If I go on spoon feeding my teachers, this you have to do like this, this you have to do like this, ये सीधा होना चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए, पेंसिल से लिखना है, ये पेन से लिखना है, तो वो उतना ही सीखेंगे जितना मैं उन्हें बताऊंगी. लेकिन अगर मैं उनसे ये कहूं कि I expect something like this from you, then what can they do? They can use their own creativity, they can use their own sixth sense, they can use their own imagination, they can use their own thinking, and maybe they will present something which is much more better than what I was expecting. So please remember that same thing happens with your students. Please stop spoon feeding them. You have to, by doing, or by leading, or by becoming a role model, or by putting something on the paper, you will have to tell them what are your expectations as a teacher from the child, and allow the child to fulfill that expectation उसके अपने तरीके से. क्योंकि हर बच्चे का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का कंसीव करने का तरीका, परसीव करने का तरीका, परसेप्शन, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ अलग होता है. हम अगर सिर्फ ये बता दें कि हमें एंड प्रोडक्ट ये चाहिए और वो कैसे उस एंड प्रोडक्ट को ला रहा है, उसकी क्रिएटिविटी को हम किल नहीं करें, अलाउ करें उसको क्रिएटिव रहने के लिए, तो मुझे लगता है आपके स्कूल में एक अनोखा लर्निंग कल्चर डेवलप हो.
तो लर्निंग कल्चर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत इसको इस टॉपिक में मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे सकती, मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आपको इस टॉपिक को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आप इसको अपने क्लासरूम के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने बच्चों के बीच में कैसे परोसेंगे, ये आपको सोचना होगा। मैं बहुत सिंपल सी एक बात बताती हूँ। जब मेरी मम्मी हमारे घर आती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही हूँ, अचानक मेरी मम्मी आई बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में, तो हम लोग अभी भी खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप, हम खड़े हो जाते हैं। और अगर हम रिमोट पे कुछ भी चैनल देख रहे होते हैं, तो ये पता नहीं एक आदत सी बन गई है कि रिमोट उनको दे देते हैं। सपोज यू वांट टू चेंज, आप सीनियर है तो आप चेंज कर सकते हो, भैया आपके सामने मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सो बार बार ये करने के लिए कोई मुझे बोलता नहीं है, कोई मुझे ये नहीं कहता है कि आपकी मम्मी आई है तो आप खड़े हो जाओ, आपकी मम्मी आई है तो आप रिमोट दे दो। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। इसी को कहते हैं कल्चर। हर घर का, हर स्कूल का, हर क्लासरूम का एक अपना कल्चर होता है, और वो कल्चर कैसे बिल्डअप होता है और आप उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप समझ गए मैं कल्चर से क्या मीन कर रही हूँ। आप किसी भी स्कूल के अंदर घुस जाइए, आप किसी भी स्कूल के गेट के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप गेट के बाहर से ही समझ सकते हैं स्कूल का लर्निंग कल्चर कैसा होगा या उस स्कूल का कल्चर कैसा होगा। हम लर्निंग वर्ड को हटा देते हैं, हम सिंपल वर्ड रखते हैं, स्कूल का कल्चर कैसा होगा। स्कूल के गेट के बाहर से ही समझ में आ जाता है उस स्कूल का कल्चर कैसा हो सकता है। हो सकता है अंदर जाने के बाद आपकी थॉट प्रोसेसेस थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो, आपकी फीलिंग्स थोड़ी चेंज हो, लेकिन मोर और लेस आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो सोचते हैं गेट पे खड़े होकर वही आपको अंदर ही मिलता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये कल्चर वर्ड जो है ये बड़ा ही सेंसिटिव वर्ड है, इसको मैक्रो लेवल में समझने की जरूरत है और माइक्रो लेवल में भी समझने की जरूरत है, तभी आप स्कूल के कल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज परमिट मी टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वंडरफुल टॉपिक विद यू टुडे। इट्स रियली अ वेरी हेल्पफुल टॉपिक अगर आप इसको समझते हैं डिटेल्स में। तो मैं आज के इस लास्ट सेशन ऑफ द सेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा ध्यान से सुने मिताली मैम क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं, और इससे आपका स्कूल बहुत इंप्रूव करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो डेवलपिंग अ लर्निंग कल्चर is our topic for the day. Are we going to discuss this today? Okay. Now, what is learning culture? First question that haunts our mind is, what is the learning culture of a school? तो एक जवाब है यहाँ पर कि लर्निंग कल्चर इज इक्वल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज इन अ स्कूल। हमारे स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं, हमारे स्कूल में जिस टाइप का होमवर्क हम लोग देते हैं, हमारे स्कूल में जिस टाइप की एक्टिविटीज हम करते हैं, हमारे स्कूल का जो नियम कानून होता है, हमारे स्कूल का जो स्कूल डायरी होता है, उसमें जो बातें लिखी हुई रहती हैं, क्या वही हमारा स्कूल का कल्चर है? ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। You can please answer in the chat box. I'll be very, very happy to read your answers. ये सेशन के शुरू में मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, सेशन के अंत में फिर से यही सवाल दोहराऊंगी। आप देखिएगा क्या आपके जवाब में कुछ फर्क आया या आपका जवाब वही है, and then we'll discuss this. Please try to understand this question once again. Somebody is saying yes ma'am, very good, very good, all of you are correct, nobody is wrong. मिताली मैम के सेशन में यही इंटरेस्टिंग बात है कि कोई गलत नहीं होता, सारे लोग answers are correct. Many of you are saying yes. My question is very simple to the floor, and the question is, जो भी एक्टिविटीज हम अपने स्कूल में करते हैं, जो भी टास्क हम अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं, क्या वही हमारे स्कूल का कल्चर बन जाता है? Somebody saying no. Okay, so we have answers as yes, answers as no. We have to wait till the end of the session to find out that yes is a better answer or no is a better answer. Okay, so let's proceed further, my dear friends. Some examples of your school culture, please. Anybody, you can chat and tell me, क्या आपके स्कूल का कुछ कल्चर है? कोई ऐसा, लर्निंग वर्ड को हटा देते हैं फिलहाल, कोई ऐसा कल्चर जो आपके स्कूल में है, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं? कोई ऐसा कल्चर है आपके स्कूल में? एनीवन? मेरे स्कूल में है एक बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है, आई टेल यू, जो मैंने सिर्फ इसी स्कूल में देखा, लेकिन बड़ा अच्छा कल्चर है। मेरे स्कूल में कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ, कोई भी स्टूडेंट कभी रिसेप्शन पर नहीं आता है, चाहे कुछ हो जाए। वो प्रिंसिपल्स रूम में आना उसको
उसको पसंद है, वो आ सकता है, वो फ्रीली मेरे रूम में आकर मुझसे डिस्कस करता है। लेकिन मैंने मार्क किया है, मैंने पॉइंट किया है कि अगर मैं किसी भी टीचर को, किसी भी बच्चे को गो टू द रिसेप्शन, वो कभी नहीं जाएगा। रिसेप्शन पे मेरे स्कूल का कोई बच्चा नहीं जाता। एंड यू नो इट्स समथिंग वेरी गुड। द रिसेप्शन कैन वर्क वेरी फ्रीली। जो नए लोग आते हैं वो, उनको ये पता ही नहीं चलता कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा बुरा ये मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अंदर की बात उनको नहीं पता चलती है। रिसेप्शन इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड अलूफ प्लेस, एंड इट्स ओनली मोस्टली फॉर द आउटसाइडर्स। ओके, एक कल्चर जो मैंने ऑब्जर्व किया मेरे स्कूल में। और कोई कल्चर आप भी बता सकते हैं प्लीज, आपके स्कूल का कोई ऐसा कल्चर है? डिसिप्लिन मत लिखिए, बिकॉज डिसिप्लिन इज वाइड फोरम। You, what have you observed as a culture of your school? Anything that you've observed as a culture of your school? Anyone? I'm waiting for some interesting answers. Starts from the security guards conduct. Very good. तो आपके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड कंडक्ट क्या है, कैसा है? मैं आपके स्कूल के कल्चर के बारे में पूछ रही हूँ। एनी स्ट्राइकिंग कल्चर ऑफ योर स्कूल? Any striking culture of your school? Please mind my words. Please understand the question. I'm asking you, is there any striking culture of your school which you can point out? Respect to everyone. Wonderful. Thank you so much, Divya ji. Divya ji के स्कूल में जब भी आप जाएंगे तो सबको रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई वहां डिसरिस्पेक्टेड नहीं फील करेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Positive environment. Can we know a little more about positive environment? What is positive environment? What do you mean? Daily worship of, कुछ लिखा था आपने, of God, I think. Daily worship होती है वहां, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Anything else? Anything else? As a school culture, respect, love of nature and cleanliness. Very good, Satyajit ji. आपके स्कूल में आप कह रहे हैं everybody loves हवन. Okay, हवन. Nature love. Very good. Wonderful answers are coming. Thank you so much, dear friends. We proceed further. These are things which build up your school. You can see they are the foundation stones of your school. हमारे स्कूल में रोज हवन होता है, हमारे स्कूल में रोज पूजा होती है, हमारे स्कूल में सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, गलत लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज यूज करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल आंसर्स, थैंक यू सो मच। Now let us try to understand what is meant by a learning culture. Learning culture का मतलब क्या हुआ? What do you understand when you say the learning culture of my school is such and such? Actually, my dear friends, यहाँ एक word आप समझिए. There's a word implicit ways. Implicit में मतलब होता है जो हम कहते नहीं है फिर भी हम कहते हैं, जो मेरे डायरी में नहीं लिखा हुआ फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम बोलते नहीं है फिर भी मेरे स्कूल में होता है, जो हम रूल नहीं बनाते हैं फिर भी चलता है, जो हम सुनते नहीं है फिर भी सुनाते हैं। These are known as implicit ways. For example, जैसे आपने कहा, अगर मैं आपके स्कूल जाऊं और मैं वहां जाकर देखूं कि इतनी सारी हरियाली है, हर क्लासरूम में पौधे लगे हुए हैं, बच्चे उनका केयर ले रहे हैं, कोई पौधा मरा हुआ नहीं है, कोई पौधा दुखी नहीं है, सारे मुस्कुराते हुए पौधे हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा, अरे यार इस स्कूल में नेचर के बहुत क्लोज हैं सारे बच्चे, टीचर, स्टाफ। तो उस स्कूल में जाकर हम किसी पौधे को तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, किसी फ्लावर को पिकअप करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे आपके स्कूल में देखकर ये समझ में आ गया कि भाई इस स्कूल में लोग पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। आई बेटर नॉट डैमेज एनीथिंग। यानी किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप डैमेज मत करो पेड़ पौधे को, मुझे देखकर ही समझ में आ गया कि भैया यहाँ पेड़ पौधे को डैमेज नहीं करना है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ जब मैं ये कह रही हूँ कि अनसेड, अनहर्ड, अनसीन, कोई देख नहीं रहा है फिर भी मैं वो काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, एम्बियंस से, ऑरा से मुझे समझ में आ रही है स्कूल का कल्चर है। Are you getting my thing? अगर मान लीजिए अभी आपका न्यू सेशन शुरू होगा, मेरा भी न्यू सेशन 5 तारीख से शुरू है, मैं कभी भी असेंबली में नहीं अनाउंस करती कि बच्चियों को 2 चोटी बनानी है। पहले दिन मैं देखती हूँ जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, कोई 1 चोटी बनाया है, कोई फैंसी रबर बैंड लगाया है, क्लिप लगाया है, ऐसे वैसे जो भी है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे दिन, सेकेंड डे मैं स्कूल पहुंचती हूँ, मैं देखती हूँ 99% नई एडमिशन वाले बच्चियों ने भी 2 चोटी बना लिया। क्यों बना लिया? किसी ने उनको बोला नहीं, उन्होंने फिर भी बना लिया, क्योंकि पहला दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिस इज द कल्चर।
I'm sorry, that was an important call. I had to pick it up. Okay. Now, you understand what I say when I say unsaid, unseen, unheard. किसी ने बोला नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये खुद ब खुद हो गया. तो ये होता है culture. So what is school culture? School culture is the implicit ways in which notions, beliefs, understanding about the purpose of teaching learning processes are shaped in everyday life of the school through the agencies of the stakeholders. Who are the agencies? Who are the stakeholders? Principal, teacher, community, school management. जैसे हो सकता है मेरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कोई बच्चा आए, अगर कोई दूसरा बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ता हो वो कहेगा बाप रे बाप, उस स्कूल में प्रिंसिपल मैम बहुत स्ट्रिक्ट है. ये कल्चर है. ये एक मैसेज है. ये एक ऐसा मैसेज है जो आपके चारों तरफ घूम रहा है. कोई नहीं कह रहा है कि प्रिंसिपल मैम स्ट्रिक्ट है, लेकिन सब कोई कह रहा है कि प्रिंसिपल मैम स्ट्रिक्ट है. You getting my point? You are understanding what is the meaning of culture? Okay. So today's training, we are trying to focus that how can we develop learning culture in our school. हम बच्चों से कुछ expectations रखते हैं, वो कैसे हम बच्चों के सामने रख सकते हैं कि देखो भैया तुमने स्कूल में एडमिशन लिया है, तुम स्कूल में पढ़ते हो, तो ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये चीजें हम तुमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन बिना बोले, बिना रूल बनाए, बिना स्टैंपिंग किए हम इन चीजों को कैसे बता सकते हैं. इसके लिए हमारे पास है कुछ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स और कुछ एम्बेडेड एटीट्यूड्स. एम्बेडेड एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? एम्बेड मतलब अंदर धसा हुआ है. कुछ ऐसी एटीट्यूड्स है, कुछ ऐसी फॉलोइंग्स है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर है जो हमारे स्कूल के अंदर तक धसा हुआ है. जो आता है वही काम करता है. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं. ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो अनसेड है और लेकिन एक प्रैक्टिस में है, वो बिलीव में है. These are observable behaviors. So please remember this, that you can understand the culture of a school, you can understand the pulse of the school by observing the behavior of the people in that school. When I say observing the behavior of people, I mean students, I mean principal, I mean teachers, I mean staff members, I mean everybody around. Okay. And by studying the embedded attitude of people, जो एटीट्यूड है लोगों का, उसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि भैया इस स्कूल का लर्निंग कल्चर कैसा होगा. नाउ नेक्स्ट, व्हाई इज अ लर्निंग कल्चर इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरत है कल्चर की? हम बच्चों को बता भी तो सकते हैं ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है आपसे, भैया ये पूरा करो. व्हाई डू वी नीड अ कल्चर? अगर एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस कोई पूरा ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरे स्कूल में कोई कल्चर डेवलप नहीं हो. लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस है और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये कल्चर डेवलप हो रहा है और बाकी लोग बिना बोले, बिना बताए उनको उन चीजों को समझ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं. लर्निंग कल्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस बिलीव्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस. भाई मेरे स्कूल का ये वैल्यू सिस्टम है, मेरे स्कूल का ये बिलीफ सिस्टम है, मेरे स्कूल के एक्सपेक्टेशंस है. जब आप मेरे स्कूल का पार्ट बनोगे, मेरे टीम की पार्ट बनोगे, मेरे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टाफ, जैसे भी आप मेरी टीम की पार्ट बनोगे, आपसे ये एक्सपेक्टेशंस, ये विश्वास, ये नॉर्म्स आपको फॉलो करने, वैल्यू सिस्टम्स आपको माननी होंगी. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, engage meaningfully, innovate and learn. क्योंकि एक कल्चर एस्टैब्लिश्ड है, एक कल्चर है, उस कल्चर के ऊपर आप जितनी भी मंजिलें बनाना चाहें आप बना सकते हैं, क्योंकि द फाउंडेशन हैज बीन ऑलरेडी लेड. फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लासरूम में जाते हैं टीचर्स और आपको मिलता है भाई इधर कोई बच्चा उधर डांस कर रहा है, कोई इधर गाना गा रहा है, कोई इधर हल्ला कर रहा है, कोई इधर घूम रहा है, तो आपका तो आधा पीरियड किसमें चला जाएगा? Hey students keep quiet, students keep quiet, please sit at your place. ये बोलते बोलते आपका आधा पीरियड खत्म हो गया. लेकिन अगर आप एक क्लासरूम में जाएं और आपको मिले कि भाई सारे बच्चे जगह पे बैठे हुए हैं, सबने अपनी किताब खोल रखी है, बोर्ड ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, तो आपका समय बचा. अब आप डायरेक्टली अपने टॉपिक पे जा सकते हो, अपने कंटेंट पे जा सकते हैं. सिमिलर इज द स्कूल कल्चर. अगर ऑलरेडी कल्चर एस्टैब्लिश्ड है, अगर चीजें अपनी जगह पे हैं, तो आप as a teacher, as a principal, or as a parent, or as a student, अपनी डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं without wasting time on putting things in the right place. They are already in place. So school culture is very, very important for the growth of the school. Are you understanding this? Now the question arises, very important question, my dear friends, and the question is, how to develop a learning culture in my school?
How to develop learning culture in my school. भैया ये लर्निंग कल्चर सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे स्कूल में लर्निंग कल्चर डेवलप कैसे करें? तो उसके कुछ एक्शनेबल्स हैं। क्या क्या एक्शनेबल्स है आप देखिए। द फर्स्ट एक्शनेबल इज क्रिएट द सोशल ग्लू। सोशल ग्लू का मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? सोशल ग्लू का मतलब है, सोशल ग्लू का मतलब है you have to build trust in the society. फॉर एग्जाम्पल मैं मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हूं, तो मुझे ये ट्रस्ट बिल्ड करना है सोसाइटी में कि मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सक्यूज मी, दूसरा पॉइंट, यहाँ बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स खाली मेरे बोलने से थोड़ी होगा। सोसाइटी को, समाज को, पेरेंट्स को ये विश्वास होना होगा कि हाँ सच में जो ये बातें बोली जा रही है वो यहाँ प्रैक्टिस होती है। So the first thing, if you want to develop a social culture, learning culture in your school, you have to develop a social glue. Number 2, you have to develop policies and systems which support the learning culture. अब आपका learning culture कहता है कि all children are expected to wear neat and clean uniform, ठीक है? और आपके स्कूल में कोई फिक्स यूनिफॉर्म ही नहीं है, जो मन करे बच्चा पहन ले। स्वेटर नहीं है तो घर से जैकेट पहन लो, जैकेट नहीं है तो लाल नहीं है पीला पहन लो, पीला नहीं है तो हरा पहन लो, कुछ भी आपके स्कूल का यूनिफॉर्म है। आपके डायरेक्टर या आपके चेयरमैन कहते हैं पहनने दीजिए ना मैम बच्चों को जो मन करे। तो आप कैसे ये लर्निंग कल्चर बनाओगे कि चिल्ड्रन हैव टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, दैट यूनिफॉर्म, लेंथ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, ब्रेथ इतना होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए, आप नहीं कर सकते। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं वो आपके कल्चर के साथ मैच होनी चाहिए। नंबर 3, keep students at the heart of the learning center. Please remember this, please remember this, please remember this. आपके स्कूल में वो सब चीज होती है जो होनी चाहिए, लेकिन आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते। अगर आप अपने टीचर्स को कहते हैं कि आज स्कूल में आपको 4 बजे तक रुकना है, तो सारे टीचर्स हल्ला करना शुरू कर देंगे, नहीं रुकेंगे 4 बजे तक, मैंने घर में काम है, ये है वो है। लेकिन वो कोई टीचर अगर आपसे ये नहीं पूछे कि मैम क्यों रुकना है, सर क्यों रुकना है, कुछ काम है बच्चों से रिलेटेड है, क्या बच्चे भी रहेंगे, क्या हमें पढ़ाना है, क्या हमें कुछ प्रोग्राम की तैयारी करनी है, इसका मतलब आपके स्कूल में बच्चों को हार्ट ऑफ द लर्निंग कल्चर में नहीं रखा जाता है। द टीचर्स आर एट द हार्ट ऑफ द school, students are not. But please understand, I may sound a little rude here, but you have to understand that the entire education system, children are at the center of that universe. आपके स्कूल में जब तक आप बच्चों को सेंटर में रखकर नहीं सोचेंगे तब तक आपका स्कूल एक अनसक्सेसफुल स्कूल होगा। लर्निंग कल्चर कभी सही तरीके से डेवलप नहीं है, बिकॉज हु इज लर्निंग इन योर स्कूल? द चिल्ड्रन। फर्स्ट, द चिल्ड्रन आर लर्निंग। नेक्स्ट, encourage teachers to deepen their learning. Teachers mostly think that I have done my B.Ed, I have done my M.Ed, I have done my graduation, post-graduation, I'm perfect. But actually, learning should never stop. The day your learning stops, you fall behind in the race and you can never be an active member in developing the learning culture of your school. Make parents active partners in learning. You know, there's a triangle. Every school runs on how wonderfully these 3 vertices of the triangle are interconnected to each other. That is the secret of a successful school. And who are the 3 vertices? Number 1 is a student. Number 2 is the parent. And number 3 is the teachers. If these 3 corners are joined properly and they share a perfect bond, only then the school will run well. So please don't ignore your parents. Please don't try to throw them away. Of course, society is. There are so many stakeholders, ma'am. Society, community, vendors, clients, other schools, universities, etc., etc. But here we are talking about this triangle, which is the most important part, most important stakeholders of the school. Okay. So the parent, the teacher, and hope you're understanding what I'm trying to say here. Now, these are the actionables. You have to try this if you really want
the school to do well. Just a minute. Just a minute, my dear teachers. Okay, Naji, okay. Okay. Let's understand. Let us try and understand how to achieve each of the actionables. Now, the first actionable is to build a social glue. Social glue के लिए सबसे important is to build up trust and respect. To build trust and respect. How do we do that? फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में 100 बसेस चलती है, आपका बहुत बड़ा स्कूल है, 100 बसेस हैं। अचानक एक बस खराब हो जाती है और आप सारे बच्चों को रोड पे उतार देते हो, बोलते घर चले जाओ बेटा, छुट्टी के समय बस खराब हुई, घर चले जाओ बेटा, आज तो बस खराब हो गई इसलिए मैं तुम्हारे स्टॉप तक नहीं जा सकता। अब रास्ते में ईश्वर न करे, गॉड फॉरबिड, कोई बच्चा रास्ते से घर जा रहा है, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, उसे किडनैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको क्या लगता है, will you ever be able to build trust and respect for yourself in the society? और अगर बच्चे को कुछ नहीं भी होता है तो भी do you think you'll be able to develop trust and respect? आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम हुई और आपने बच्चे को रास्ते में छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आपने स्कूल एल्मनाक में लिख रखा था भैया बस खराब होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपने बच्चे को उतार दिया रोड पे, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आप तो कानून के हिसाब से चल रहे हो, आपने डायरी में लिखा, आपने किया उस काम को। लेकिन क्या आप कभी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड कर पाएंगे? What do you say? Yes or no? Will you be able to do that ever? Is it a yes or a no from your side? Of course, no, no, no. Because you have not kept the child at the center of your universe. आपने ये नहीं सोचा कि मैं अगर बच्चे को रोड पे छोड़ दूंगा और बच्चा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कैसे होगा, बच्चा घर बहुत लेट से पहुंचेगा, उसे भूख लग जाएगी, उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। So the first step towards developing a social glue is you have to build trust and respect. Now, how will you build trust and respect? This I don't think I need to discuss with you. Every school has their own policies to build trust and respect. Every school stretches itself beyond the comfort zone to build up this trust and respect. So you have to also do the same thing. Okay. Next is how to create a social glue. कैसे मैं ऐसा क्या करूं कि समाज में मेरा स्कूल प्रतिष्ठित हो, लोग मेरे स्कूल को पसंद करें, लोग मेरे स्कूल को चाहें, लोग कहे कि नहीं एडमिशन लेना है तो इसी स्कूल में लेना है, क्या करें? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें इंगेज करना चाहिए। You have to engage your school and its processes as fair, transparent and easy to understand. आपके जितने भी प्रोसेसेस होने चाहिए स्कूल में वो फेयर होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मैंने तो लिख दिया ये फी है, एडमिशन लेने के बाद मैं 4 फी और डिस्क्लोज कर रहा हूं। मैंने तो बोला था कि हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे, एडमिशन लेने के बाद हम कहते थे भैया नहीं पढ़ा सकते, टीचर नहीं मिला। सो यू आर नॉट फेयर, यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट। समटाइम्स यू नो द सर्कुलर्स दैट द स्कूल गिव, the language the school presents in the school diary is so difficult that parents don't even understand. The form is so cumbersome, so difficult. Parents don't even understand. They just fill up. कि भैया मुझे एडमिशन लेना, फिलअप करो, काम खत्म करो। बहुत समय तो फॉर्म भी नहीं फिल कर पाते, दूसरे फ्रंट ऑफिस को कहते फॉर्म भर दो। इतना मुश्किल फॉर्म है हमारा, इतने पेजेस है, इतना लिखना है, इतने डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड अदर्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग टू बी अंडरस्टूड। आपको दूसरे को समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको कोई समझे, कि आप वहां के स्टाफ हो। अगला जब बाहर से आता है आपके सिस्टम में, उसको समझना ज्यादा जरूरी। तीसरा, encourage positivity and empathy among stakeholders. आपको अपने स्टेक होल्डर्स में नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी रिफिल करना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हम कैसे पॉजिटिविटी करेंगे इसके लिए एक अलग सेशन लूंगी, बट पॉजिटिविटी इन्फोर्स करना है। Create opportunities for staffs and students well-being. आपका स्कूल कौन चलाता है? आपके स्टाफ, आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स। आप चलाते हो स्कूल, so you have to
Create opportunities for yourself and for others. Celebrate success stories. Provide physiologically safe environment. Your child should feel safe. ऐसा नहीं कि बाबू डाकू गब्बर सिंह आ गया मेरे क्लास में, अब तो मेरी पिटाई होने वाली है. ऐसा नहीं सोचे बच्चे. बच्चों को आपका इंतजार होना चाहिए. बच्चों को फील होना चाहिए, बाप रे वो सर कब आएंगे, वो मैम कब आएंगे. आई एम डाइंग टू अटेंड हिज और हर क्लास. Listen and support. Be a role model. And this is for the principal. Demonstrate that principal is also a lifelong learner. Please understand this. हम principal हैं, हम teacher, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे. हम तो सिर्फ पढ़ाएंगे. मैं teacher को पढ़ाऊंगी as a principal, teachers बच्चों को पढ़ाएंगे. ऐसा कभी नहीं हो सकता. Everybody has to be together and form a large team where everybody is learning and unlearning. Every day we are learning and unlearning, and that's a part of life. That's a part of education sector. So if you can do this, engage, understand, encourage, create, celebrate, provide, listen, support, be, and demonstrate, then only you can create a social glue. अदरवाइज आप सिर्फ भाषण देंगे, आप कहेंगे ये करना चाहिए मदर को, वो करना चाहिए फादर को, आप खुद कुछ नहीं करेंगे. पेरेंट्स को समय देना चाहिए, पेरेंट्स को पैसा देना चाहिए, लेकिन टीचर कुछ नहीं करेगा. कैसे होगा? कैसे आप बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज बनाएंगे अपनी स्कूल की? ये नहीं पॉसिबल. नेक्स्ट, लेट्स कम टू developing policies and systems that support a culture of learning. As I already told you, your policies have to be transparent. हर चीज क्लियर होनी चाहिए. एडमिशन के पहले भी मैंने आपको जो बात कही, एडमिशन के बाद भी मैं वही बात कहूंगा या कहूंगी. That is also for the students, that is also for the teachers, that is also for the management. Establish transparent communication. Don't hide things. Establish a safe and secure school. Safety is the first priority of any parent. मेरा स्कूल, बच्चे का स्कूल सेफ है या नहीं. Robust procedures for effectively implementing policies. सिर्फ policies बनाने से नहीं होंगे, उसको implement कैसे करेंगे, हम धरातल पे उतारेंगे कैसे. Implementation is also very very important thing. आप बड़ी बड़ी बातें लिख देते हो अपने पोस्टर्स में, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जाओ तो पता चला ग्रिल्स ही नहीं. बच्चा कूद कर इस तरफ से उस तरफ जा सकता है. पता चला क्लासरूम में बच्चे के बैठने का जो बेंच है उसका एज अप्रोप्रिएट बेंच नहीं है, हाइट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. So what you're saying and what you're practicing, दोनों में difference हो जाता है. That's wrong. Minimize disruptions to classroom instructional time. Very very important. बहुत सारे schools में आप देखेंगे दिन भर PA system से announcement हो रहा है, दिन भर teachers को बुलाया जा रहा है, दिन भर कोई ना कोई चपरासी class के अंदर चला जा रहा है, दिन भर class suspend हो रहा है due to one reason or the other. So this way you can never establish a good school. Hold students, teachers, para teachers accountable. अकाउंटेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर मेरा यहाँ बच्चा गिर गया तो किसकी अकाउंटेबिलिटी? अगर मेरा बच्चा फेल किया किसकी अकाउंटेबिलिटी? अगर मेरा बच्चा पास किया तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अगर मेरा बच्चा फर्स्ट एड नहीं मिला तो किसकी अकाउंटेबिलिटी? एवरीवेयर अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम घर पे भी तो अकाउंटेबल होते हैं या नहीं? खाने में नमक ज्यादा हो गया, किसकी अकाउंटेबिलिटी? भाई जिसने खाना बनाया. किसने बनाया? मम्मी ने बनाया. चलो मम्मी अकाउंटेबल हो गई. तो हम स्कूल में क्यों नहीं अकाउंटेबल हो सकते हैं? व्हाई नॉट? नेक्स्ट इज regularly provide updates to stakeholders. आजकल, this is the age of, what do you say, technology. You have WhatsApp groups, you have this, you have that. आप भेजते रहो information. आखिर उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट.
is regularly provide updates to the stakeholders. As I already told you, you have to keep your parents, not only parents are not stakeholders. I hope you understand this, that the community, entire community is a stakeholder, all the vendors or the clients or your staff members, guard, everybody is a stakeholder. So you have to keep updating them. And finally, ensure decisions are backed by research and data driven, especially for the leaders. If you're the head of the department, if you're in charge, if you're the headmistress, if you're the vice principal, if you're the principal, please understand this, that never prepare a policy, draft a policy based on somebody else's view. Whenever you are drafting a policy, you must understand कि मैं ये policy क्यों बना रही हूँ, क्यों ये change लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मेरे पास ऐसा कोई data है which is compelling me to make this change in the policy, which is compelling me to prepare this policy for at all. So always understand this, that whatever decisions you are taking, अगर आप अपने बच्चों के लिए remedial classes arrange कर रहे हो, अगर आप evening games arrange कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितने पेरेंट्स चाहते हैं, कितने बच्चे चाहते हैं, that data should be there. Data driven decisions, there are chances that they are correct. Or non-data driven decisions, decisions which are taken on impulse, on the basis of emotions, they are likely to be wrong. Okay, in case of schools, because we cannot govern a school by our emotions, we have to govern it through some data. Next, keep the students at the heart of the learning culture. It's a beautiful, beautiful thing. And I really love this quote. Whatever you do it for your kids. Think about them and do. आप सिर्फ ये सोचना, मैं अपने स्कूल में ये कहती हूँ, अगर आप उसकी मम्मी होती या पापा होते कि आप ये काम करते, go ahead, do it. अगर आप मम्मी पापा होते ये काम नहीं करते तो एज अ टीचर भी आपको कभी नहीं करना चाहिए. Okay, now somebody saying no audio till now. Am I not audible? Am I not audible, my dear friends? Yes, ma'am, audible. Okay, then let's go ahead. Next. Next, set and communicate high expectations. अपने बच्चों को day one से ही समझाइए, this is what I expect from you. कैसे अचीव करना है ये तुम समझो. Expectations मेरी ये. Provide challenging opportunities, जहां बच्चों को मजा आए काम करने में, वो करना चाहे, challenge pose कीजिए उन पे. Encourage students to take up responsibilities. Everybody should get a chance to become a monitor, a leader. Encourage students to use assessment as feedback, not as exam results. मेरा assessment का result आया, मुझे पता चला कि मैं polynomials मेरा weak chapter है, तो मुझे polynomials पे मेहनत करना है. कहने का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक सेकंड, just give me a second. Okay. Next is, please, just by teaching English, Hindi, maths and science and social science and ICT and PHE, things will not happen. You have to develop the child's inner potentials. Expose the child to vocational education. See what the child is interested in. See what fascinates the child. And please, please give due emphasis on 21st century skills. What are the 21st century skills? You have the 4 C's, you have FLIPS, and you have IMT. That is related to media, technology, and computer related knowledge. 4 C's means communication, critical thinking, creativity, and collaboration. FLIPS means flexibility, leadership, interpersonal skills, productivity, and being smart. ये चीजें भी आपके बच्चों को सिखाइए. सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिंदी सिखाने से नहीं काम चलेगा. और जब ये सारी चीजें देकर आप उस बच्चे को एकदम तैयार करिएगा फॉर द वर्ल्ड, to become global citizens, then only your school will have a high learning culture. Otherwise तो फिर सारे schools जैसे आप भी वो showcase करोगे, 100% board results, 5 IITN निकला, 2 NEET में निकला. That is not the school's need today. What the school needs is global citizens who are ready for the future, that is so uncertain.
आप जो आज पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद जब वो नौकरी में जाए या 15 साल बाद जब वो नौकरी में जाए, उसको उन चीजों की जरूरत ही नहीं हो। हम में से किसकी नौकरी में पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा जाता है या बाइनरी फिजन के बारे में पूछा जाता है? नन ऑफ अस, कोई नहीं पूछता हमसे। लेकिन हाँ, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को आजमाया जाता है, हमारी क्रिएटिविटी को देखा जाता है, और ये चीजें हम जनरली स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल का लर्निंग कल्चर कम हो जाता है, उसका कद छोटा हो जाता है। अगर आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने स्कूल में, तभी आपका लर्निंग कल्चर ब्रॉडन होगा, शेप अप होगा, और आपका स्कूल अच्छा करेगा। नेक्स्ट, these are the 21st century skills I was just talking to you about. The 4 C's, the information, media, technology use, and of course flips का full form मैंने आपको already बता दिया। Flexibility, leadership, interpersonal skills and productivity, ये आपके 21st century skills हैं। ये develop करना अपने बच्चों को सिखाइए। Next, you can do activities like this: chat show, interview, mind map, singing, newsletter article writing, letter to the editor writing. अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपके 21st century skills में help करेगा। वैसे 21st century skill is a separate topic in itself. Many of you might have attended it. और कैसे 21st century skills develop होते हैं, सारी चीज हमने समझाई थी। अगर आपने वो सेशन मिस किया या कहीं कभी नहीं किया वो सेशन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सीबीएसई की बहुत बेहतरीन मैनुअल है 21st century skills पे। You can grab a copy of it, you can download it from the internet, and then as a teacher you can enrich yourself by learning more about how to develop 21st century skills in students. Next, अब बारी आती है आपकी। You should also be encouraged to deepen your learning. वैसे तो हम टीचर्स 90% टाइम यही समझते हैं कि हम टीचर हैं, इसका मतलब हमें सब कुछ आता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप टीचर इसलिए आपको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप जब स्टूडेंट थे और आप जब टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे, और आज में बहुत सारी चीजें नई नई हुई हैं। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। सो प्लीज डीपन योर लर्निंग। When you teach, when you take a class, after every class you should think, और कैसे अच्छा हो सकता था, क्या मिस हो गया, क्या अच्छा हुआ, क्या मैं दोबारा दूसरे क्लास में भी इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ये बड़ा अच्छा हुआ आज क्लास में। सो प्लीज रिफ्लेक्ट अपॉन योर क्लासेस। इसलिए टीचर्स आर आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अपने आप से वो देखते हैं और समझते हैं कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ और ऐसे अपने आप को बचा सकता हूँ गिरने से। बिल्ड अ क्लाइमेट फॉर अडॉप्टिंग इनोवेटिव चेंजेस। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके स्कूल का प्रिंसिपल, आपके स्कूल का मैनेजमेंट आपको सपोर्ट ही नहीं करे, तो आप कभी कुछ नया कर पाएंगे? So it's very important that you stay in a school where the management supports your creativity, your innovativeness. That's very important. Next is sharing best practices. Please share what you learn. Always remember, एक नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना शेयर करोगे वो उतना अच्छा होगा। आप नहीं शेयर करोगे नहीं अच्छा होगा। सो प्लीज शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट, encourage innovative pedagogical practices that enhance student engagement. आपको हमेशा अप्रेस्ड रहना है जो चेंजेस हो रही है एजुकेशन इंडस्ट्री में, ताकि आप बेस्ट पेडागोजी दे सके अपने बच्चों को, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस दे सके अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को प्रॉपर्ली इंगेज रख सके। क्योंकि इफ योर चिल्ड्रन आर नॉट engaged in the classroom, then there'll be discipline issues, they will shout, they will trouble each other, they will trouble you also. So please understand this, that keeping the children engaged in the classroom is very, very important. And how can you do that? You can do that not by lecture method. You can only do that if you use some creative, innovative pedagogies in the classroom. Next, teachers should also use data for instructional planning and execution. आपने एक असेसमेंट लिया, आपने पाया उसमें कि मेरे 90% बच्चों को एडवर्बियल फ्रेज में प्रॉब्लम है, बाकी कॉन्सेप्ट्स मोटा मोटी क्लियर है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने नेक्स्ट साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाने से पहले एडवर्बियल फ्रेजेस को रिवाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेटा ने आपको ये बताया कि बच्चों को इस जगह प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू हेल्प देम आउट। सो प्लीज गो फॉर डेटा ड्रिवन प्लानिंग, डेटा ड्रिवन एग्जीक्यूशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ can you give some examples where you take decisions on the basis of data? Some examples where you take decisions on the basis of data. Anyone here can give some examples? Anyone? You can use the chat box.
a teacher, you have taken a decision on the basis of data. ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कभी ऐसा फील किया आपने कि आपने कोई डिसीजन लिया है on the basis of data? Please don't request for attendance link. That will be floated at the right time. Teachers, it seems as if you are attending the session only for the attendance link. Do you think how shameful it is for the resource person to see this kind of comments? Okay. Yes, I'm expecting some answers, please. Have you ever taken any decision? Balanced food data. Very good. आप अपने बच्चे को जब फूड के बारे में पढ़ाते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाते हैं, क्या आप डेटा से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते? क्या आप बच्चे को नहीं कहते तुमने कितना प्रोटीन लिया, तुमने कितना ये लिया, तुमने कितना वो लिया, आज फिर क्या तुम्हारा डिश बैलेंस था? So, the data will tell you whether the dish was balanced or not. आंख से देखकर आप नहीं कह सकते my dish is balanced or it is not balanced. Similarly, जब आपकी examinations होती हैं और आप ये देखते हो performance of teachers, board results, very good, wonderful. Subject wise board के जो results आए, वो डेटा आपको ये बताती है कि कौन से टीचर ने कितनी मेहनत की, कौन से टीचर प्रमोशन के लायक है, किस टीचर को ज्यादा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. Wonderful. So lovely answers are coming. Fourth, I'm very happy about this. So teachers, please understand that बहुत तरीके का डेटा आपको मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आप रोज अटेंडेंस रजिस्टर में एब्सेंट प्रेजेंट मार्क करते हो. क्या वो अटेंडेंस रजिस्टर आपको कोई डेटा नहीं देता कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो इरेगुलर हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर एब्सेंट हो जाते हैं बिना इन्फॉर्म किए? क्या उससे आपको कुछ पता चलेगा? क्या आप उनके पेरेंट्स को कॉल करके समझा सकते हैं कि अटेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है स्कूल में? अगर आप ऐसे ही, मैं आपको रैंडमली कहूं भाई नॉट डोंट चेक योर अटेंडेंस, बताओ कौन कौन बच्चा अक्सर एब्सेंट होता है, तो मे बी यू विल गिव मी सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. Very true, attendance data. So always remember this, teachers, if you want to take good decisions, if you want to take correct decisions, if you actually want to help your students, please take data driven decisions. Don't take decisions which are not based on data, which are based on your emotions, which are based on your understanding, your comprehension alone. So when your understanding comprehension is very good, but it should be added to with data, so that you always take correct decisions for your students. Now, please understand this. Parental involvement is also very, very important. How to involve parents in my school? Of course, PTMs are there. But apart from PTMs, is there anything else? Can we engage parents? Of course you can. You can call them for an assembly to give a speech. Suppose somebody's a doctor, somebody's a tailor, somebody's an engineer. You can always engage parents like this. Suppose you have a competition in the school, call the parents to be the judges. Of course, don't call the parents of the same class. Maybe from a different class, you can ask. Some extra skill training. Wonderfully, Divyaji. So thankful. Suppose there's a parent who is skilled in some field. You can call the parent and you can ask the parent to teach the children. You can even call parents for substitution classes. There are many parents who want to teach, but they're not getting a job or they're not able to do a job due to some reason. Maybe once in a while, they can come to your school and help you with some substitution classes. When you have an annual function, invite parents for makeup. They can do makeup and storytelling sessions. Beautiful answers in the chat box. Thank you so much. So keep your parents engaged also. Very good. Life skills. Very, very true. Invite parents for vocational training. Wonderful. Wonderful. Next, encourage parents. How can you encourage? Suppose there's a child who gets 100% attendance award. Instead of calling the child alone, call the parents also on the stage. Because it is because of the parents the child could do that. अगर वो बच्चे पेरेंट्स शादी में चले जाते और घूमने चले जाते, कभी नहीं हो पाता. So you can give rewards to the parents. You can send a small note appreciating the parent. You can call the parent sometimes to have a cup of coffee with you and discuss. You can call the parent for a testimonial for your schools. Encourage parents to participate in the school activities. Hold workshops for them. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती. हम माँ बाप बन जाते और हम फिर ये समझते हैं कि बहुत अच्छे माँ बाप हैं, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री नहीं है पेरेंट्स बनने की. है कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं, तो हम कैसे सीखते हैं? जनरली आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं पहले बच्चे में ये गलती कर दी, दूसरे में नहीं किया मैंने. तो वी लर्न बाय एक्सपीरियंस. So can you hold workshop for parents and give them some information that maybe they will be happy to know and they were not knowing? So you can help them in parenting their kids also. Partner with parents to create parent groups, and in there you can share so much, isn't it? So this was about parental involvement to improve the learning culture of your school. And of course, after you've done so much of hard work and good work, please don't forget to measure the impact of all the good work that you've done for your school.
Does it have any impact in the learning culture? Of course, remember this, that this is a very, very slow process. It will take time, 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 5 years, 10 years. It will take time, but you have to take the first step at least. You have to begin developing the learning culture of your school, and gradually you will see कि जब आप measure करोगे तो आपके measuring scale में भी difference आपको साफ दिखे. ठीक है? Well, that was all from my side. Thank you so much. Now over to you, dear teachers, for your questions. Over to you, all of you. If you have any questions, please ask. I hope this topic, I've been able to do some justice with this topic. Although I don't expect that everything has been conveyed, but if you've been able to understand something, if you're able to start developing the learning culture for the school, I think that's enough. Thank you so much. Your questions, please. Your question, please. Any questions? Any questions, friends? Okay, then. I think simple, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, one teacher is asking how to make the morning assembly effective. How to make the morning assembly effective is induce a lot of energy in your morning assembly. I'll tell you what I do. In my every morning assembly, for the juniors, that is from 1 to 5, I do Zumba. Every morning assembly, whenever they have morning assembly, I start with a thrilling dance session. And when my students are tired, then I start the speeches. And for the seniors, I do exercises. That is very important. Because, morning is a time when you have a lot of energy. So don't start your day with boring speeches. Please. Morning is a time when you can do a lot of good things. Physical energy is maximum. So let your children dance and sing loudly and do whatever they wish to. And the speech part and the lecture part should be as less as possible. Start your morning assembly with a positive thought, a great positive thought. Never scold anybody in the morning assembly because the day is starting. So do not start the day with negativity. Always say good things about children, say good things about the school, say good things about yourself in the morning assembly. And your morning assembly should have a very high energy level. The energy level of the morning assembly should be highest of the day, so that when the children go back to the class, when the teachers go back to the class, they go with a lot of energy. They go back with a lot of energy and they radiate out that energy throughout the day. थोड़े किश्तों में. So this is what I practice. I try to make my morning assemblies thoroughly electrifying, full of energy, as much as possible. और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 50 साल की उम्र में भी अपने बच्चों के साथ जॉगिंग करती हूँ, जुम्बा करती हूँ मॉर्निंग असेंबली में, और कभी कभी कंपटीशन भी करती हूँ कि मैं भी स्पॉट जॉगिंग कर रही हूँ और आप भी स्पॉट जॉगिंग करो, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं. और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मेरे बच्चे कभी कभी हार भी जाते हैं मुझसे, कभी कभी मैं भी हार जाती हूँ. इट्स नॉट दैट, but we have a healthy competition, and that is how we do our morning assembly. My morning assemblies are formal, of course, but they are very less formal. There's a lot of scope of having fun and enjoyment also in the assembly. So this is what I can share with you, dear friends. This is how I do it. Any other question? Thank you so much, ma'am. Now, if you have any questions,
participants can ask questions. Okay. So thank you so much, ma'am. Once again, although you declared it as the last session of the last training of the session, but I'm a little more hopeful. It all depends upon the training status. But yes, we have announced it has to be the last session. So thank you so much. Simple ma'am, you want to say something? No, sir. Thank you so much, all the participants. And as it is today is the last session, and we hope so. Many sessions will come in the coming new session, and we will get more benefited by Mitali ma'am. So thank you so much, ma'am. Thank you, Himanshu sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, ma'am. Thank you, Arivat Sahodaya, once again. Thank you, Radhika ma'am, CB Singh sir, although they are not present. But thanks a lot for providing me this platform during this academic session. I loved it thoroughly. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. So, dear participants, the attendance feedback link have already been shared, and requesting you to kindly respond to it by 6:15. And thank you. It's been a really learning session, as always. Uh, Looking forward for the next session and the next session. Thank you so much on behalf of Aryabhatta Saudi School Complex, our founder, chairman, sir, and president, ma'am, and all the other people. All our principals who have been associated, all our participants who have taken training so far. So thank you so much, one and all. Thank you. Namaskar.